transport. So now we can have some look on what हमें एग्जाम में इसको क्या लिखना है. So in semiconductors, both the charge carriers, electrons in conduction band and holes in valence band are in motion on application of external electric field, right? The electrons move in a direction opposite to the applied electric field, while holes in a direction of applied electric field, right? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में और से अपोजिट, और होल जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं. दिस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज कैरियर ड्रिफ्ट, right? As one applies an electric field to a semiconductor, the electrostatic force causes the carriers to first accelerate and then reach a constant average velocity due to collision with impurities and lattice vibration, right? ये अपनी फाइनल वेलोसिटी की एक वैल्यू तक ही जा पाते हैं क्योंकि ये कोलाइड करके तुरंत रेस्ट पर आ जाते हैं, फिर से एक्सेलरेट होते हैं, फिर कोलाइड करते हैं, फिर रेस्ट पर आ जाते हैं, राइट? तो ये नहीं कि और ये जो वेलोसिटी है ये फील्ड के बढ़ाने से एक अपनी मैक्सिमम सैचुरेटेड वैल्यू तक पहुंचती है, उसके बाद उससे ऊपर नहीं जाती, ठीक है? So the ratio of the average velocity drift velocity to the applied electric field is called as mobility. So mu is Vd upon E. The electron mobility is lower than that of hole mobility due to larger effective mass of electron. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्योंकि मास ज्यादा है तो इसकी मोबिलिटी कम होती है होल के कंपैरिजन में. The velocity saturates at high electric fields reaching the saturation velocity. Additional scattering occurs when carrier flows at the surface of a semiconductor, resulting in lower mobility due to the surface or interface scattering mechanism. अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस पर जो होता है वो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है स्कैटरिंग के कारण, राइट? तो मोबिलिटी हमारी कम होती है सरफेस पे कंपेयर टू इनसाइड द सेमीकंडक्टर. So due to their kinetic energy and random motion, the charge carrier move from regions where the carrier density is high to regions where the carrier density is low. ये इनकी टेंडेंसी होती है कि हाई से लो की तरफ ये मूव करते हैं, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं. This transport mechanism is referred to as carrier diffusion. The total current in a semiconductor equals the sum of the drift and diffusion current. तो जितना भी हमारा सेमीकंडक्टर में करंट होता है वो इन दोनों का सम होता है. डिफ्यूजन करंट तब भी होता है जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से नहीं लगाया हुआ है. ड्रिफ्ट करंट तभी आएगा जब आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया हुआ है. Diffusion of carriers is obtained by creating a carrier density gradient. Such gradient can be obtained by varying the doping density in a semiconductor or by applying a thermal gradient. Both carrier transport mechanisms are related since the same particles and scattering mechanism are involved. This leads to a relationship between the mobility and the diffusion constant called the Einstein relation.